orphans across the globe. You helped feed, clothe, nourish, and educate children who have no one else. This Ramadan, take the opportunity to support these children who are left to face the world alone. With your help, Helping Hand is able to empower orphans to reach their full potential. Donate today. 1-888-808-HELP or visit hhrd.org/OSP. अपनी दोस्तों को देखती थी तो हैरत होती थी। किसी का हस्बैंड उससे बहुत बड़ा, किसी की तालीम ना होने के बराबर, कोई तो खैर जाने दीजिए। मैंने फैसला किया है कि जब तक मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं करूंगी। फिर मिला marymax.com, पाकिस्तानियों के लिए वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां आपकी पसंद और मिजाज के लाखों रिश्ते। जब भी मुझे ये मिले, मिलाए दिल के रिश्ते। Some moments are for voicing your opinion. Some days are for expressing yourself. Some conversations are meant to keep private. Some interests are supposed to be explored together. Some comments are just for fun. Some connections are really special. Make real connections on Like app, social network with privacy. Download today. Available on Android, iOS, and web. क्या हो गया तुझे? जवान जहान लड़की है और पूरे मोहल्ले में दनदनाती फिरती है। इस बेनथे बैल को किसी खूंटे से बांधना है या नहीं? लाइए मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तहमीना। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। तहमीना से शादी करोगे? जी हाँ या ना? जिया आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट। सब रंग हैं आपसे। आजिज धामरा साहब बार बार सोशल मीडिया का तस्करा कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे कल से एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई पप्पू है जो फेल हो गया है। ये कौन सा पप्पू है जो फेल हो गया है? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे बहुत किसी का निकनेम तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो फेल या पास होने वाली बात है तो वो तो सिर्फ हुकूमत ही फेल हो रही है। वो तो उसको लीड तो इमरान खान के चेहरे के तौर पे किया जा रहा है। उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कोई पप्पू है या उसके पीछे कोई और है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन फेल तो वही होता नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए कि ये जो क्लेम्स थे, टॉल बेबी वजीर भी है, ये जो टॉल क्लेम्स थे, ये टॉल क्लेम्स जो है ये हमने तो नहीं किए थे, और हमने कोई दावतनामा तो नहीं लोगों ने भेजा इमरान खान के घर के आप जनाब आए, हमें आके आए और हमें लीड करें। ये तो खुद आए हैं, इन्हें पता था कि मोटरवे गिरवी है, इन्हें पता था कि हवाई अड्डे गिरवी हैं। क्या अब जो लोन लिया क्या इन्होंने बनीगाला गिरवी रख के लिए या अलीमा खान के फ्लैट गिरवी रख के लिए? वो भी पाकिस्तान गिरवी रख के लिए। जो रुपया गुराया है
उसमें अलीमा खान के फ्लैट तो बढ़ गए हैं, उसकी कीमत, इमरान खान के बेटे जहां रहते हैं उनकी कीमत बढ़ गई है, पाकिस्तानियों की कम हुई है। और हमने इन्हें कहा था कि आप रोज कभी एमनेस्टी को देख, कभी आप IMF जाके, कभी मेट्रो बना, लोग फ्रूट चाट खाए ना खाएं, खा रहे हैं। और रोजाना जितना मौका आप इन्हें देंगे, जितने साल देंगे, ये अपनी की हुई बातों को ही उसका उल्ट करेंगे। इन्होंने जानबूझ के ये पाकिस्तान के साथ किया है, और जो लोग जिन्होंने वोट दिया था वो पछता रहे हैं। और अब हमें अपोजिशन को रोल प्ले करना है। और अब अगर अब भी नहीं कोई सपोर्ट कर रहा है, वो कोई भी जी शूर आदमी ने सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो वो ज्यादती कर रहा है, वो कर रहा है तो जानबूझ के पाकिस्तान के साथ कर रहा है। अब तो पीछे हट जाएं और इनको वापस वहीं पहुंचाएं, यहां से ये आए थे। पाकिस्तान मजीद इनका मुकम्मल नहीं हो सकता। 9 महीने में हमने देख लिया है कि कहां से पोजीशन ये कहां पर ले गए। शहबाज गिल साहब जी, बहुत आपको वापस वहीं पहुंचाना है जहां से आप आए थे। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप अमेरिका से आए थे। बात ये है मैं अमेरिका से नहीं, मैं फैसलाबाद से आया था। अमेरिका गया था पढ़ने आप के लिए और फैसलाबाद पढ़ाने के लिए। जाएंगे? जी, आप मैं वापस पढ़ने फैसलाबाद के लिए और पढ़ाने के लिए गया था। किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं ली और एब्सकॉन्डर भी नहीं हूँ। जैसे इस टाइम एक पूरी फैमिली एब्सकॉन्डर्स की बैठी हुई है यूके में जाके। जैसे ही नैब उनको देती है नोटिस, वो इधर से भाग जाते हैं, नैब को जवाब नहीं देते, उधर पहुँच जाते हैं। एनीवे, वापस आते हैं। सीरियस बात हो रही है इकॉनमी की, क्योंकि लोग उस पर सुनना चाहते हैं तो उस पर बात करते हैं। बात सिंपल सी है, आपको दोबारा भी मैंने जो आपको अर्ज की, वो बात यह है कि जब आप कोई भी चीज़ करेंगे, अगर आप किसी किस्म का भी आज कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका कल असर नहीं निकलेगा, उसका आपको 2 साल 4 साल बाद। मैंने आपको तमाम नंबर्स दिए। बिजली पैदा जो हम कर रहे थे, इनकी पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट था, पिछले साल का 2018 का, वो 3.4 ट्रिलियन था, 3.4 खरब था। ये फिस्कल डेफिसिट ये छोड़ के गए। अब आवाम के जानने के लिए, अगर आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की गवर्नमेंट, अयूब खान के ज़माने से इन्हें गवर्नमेंट, पहली गवर्नमेंट्स में ये आना शुरू है, पीपल्स पार्टी और इन दोनों का अगर आप इक़्तिदार का टाइम मिलाएं तो ये 50 साल से ज़्यादा जाता है। आप अपने प्रोड्यूसर को कह लें, वो जमा नफ़ी कर लें, ये 50 साल से ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग का जाता है। हमें सिर्फ 8 महीने हुए हैं। जो कुछ ये करके हमें जहाँ तक छोड़ के गए, इंशाल्लाह जिस दिन हमारे 5 साल पूरे होंगे, उस दिन हम आपको दिखाएंगे, आपसे वादा है कि हम मुल्क को कहां छोड़ के जा रहे हैं। ये नंबर आपके सामने 3.4 डेफिसिट, आपके सामने एक्सपोर्ट है, आपके सामने करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपके सामने ट्रेड डेफिसिट है, आपके सामने सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। ये सिंपल सी बात है। आप जाके एक दुकान खरीदती हैं आज, उस दुकान के ऊपर उसकी सेल है 10,000 रुपए, उसके ऊपर कर्जा है 10 लाख रुपए, तो आपको पहले उठाना पड़ेगा ना उसका बोझ जिस दिन आप दुकान लेंगी। अगर उसका बेड़ा गर्क किया हुआ, कोई रेस्टोरेंट है, दुकान है, क्लिनिक है, उसका किसी ने बेड़ा गर्क किया, तो शुरू में आपको मसला होगा ना उसको चलाने के लिए। ये घर हम सबका है, इस घर को लूटा गया बुरी तरह से। कुछ ना कुछ तो हुआ ना पिछले 40 साल में। ऐसा तो नहीं था कि 2018 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उससे एक दिन पहले, जिस दिन मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट थी, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, यहाँ पे सब अच्छा था, कोई खुदकुशी नहीं कर रहा था। अब मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई हैं इफ्तिखार साहब, वो दबा के फ्रूट खा रहे थे। 500 रुपए लीमू मिलता था पिछले साल भी, 500 रुपए किलो लीमू। जी जी, 500 रुपए किलो लीमू रमजान में पिछले साल भी मिला है, इस साल भी लीमू महंगा है। जी जी, मैं बता रहा हूं, मैं तो रेट्स आपको, जी जी जी, मैं रेट्स, मेरे पास क्लिप्स हैं, मेरे पास टीवी के क्लिप्स। देखिए मुझे बात करने दीजिए, अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पे बात करें, जिसने भी करनी। कौन दे रहा था 500 जी, मेरे पास क्लिप्स हैं टीवी के, जो भी आपको 500 रुपए का लीमू जी मैं आपको ये बता रहा हूं, रमजान में मेरे पास इसके वीडियो क्लिप्स है। इस दफा भी महंगा है लीमू। ये रमजान में जखीरा अंदोजी होती है ना। आज हमने लाखों टन जो पूरे पंजाब में जखीरा अंदोजी की हुई थी, वो पकड़ के बाहर निकाली, आज बरामद की है, आज टेलीविजन पे उसका पैकेज चला। तो ये जखीरा अंदोजी पुरानी थी। जो पुलिस, जखीरा अंदोज, ये मिल्स, ये रमजान, ये मिलें किनकी हैं आपको पता है? मैं फिर नाम लूंगा, फिर मसला हो जाएगा। ये जो सारी जखीरा अंदोजी हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये कल्चर हमने शुरू किया है। ये लास्ट बात, देखिए बड़ी सिंपल सी बात ये है कि ये जिस तरह की मुल्क की माशियत यहाँ पे ये छोड़ के गए थे, मैंने आपको बताया, जो ये डेफिसिट छोड़ के गए, जो खसारा छोड़ के गए, उसके बाद ये वजन आवाम को उठाना पड़ना है। मुल्क किसी और का नहीं है। ये जो पैसा वापस करना ना मेरी जेब में ना आपकी जेब में, ये आवाम को देना पड़ना है हमारे साथ मिलकर। ये तो निकल गए, लूट मार करके बाहर निकल गए। बेटे भी वहां बैठे हैं, समधी भी वहां बैठा है, छोटे भाई भी वहां पहुंच गए हैं, बड़े भाई जाना चाहते हैं। इनका तो यहाँ कोई नहीं है, इनका यहाँ पे कुछ नहीं है। वक्त के खत्म हो रहा है। तलाल चौधरी साहब और फिर इफ्तिखार साहब का लास्ट कमेंट लूंगी। जी तलाल साहब। देखिए, गुजारिश ये है
कि बार बार जो जिंदगी में बंदा करता है बिल्कुल उसको जवाब देना चाहिए। नैब वालों को भी हम जवाब देंगे, हम बिल्कुल अदालत को भी जवाब देंगे, लेकिन कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी किसी पर हरासमेंट का केस है, उसे भी जवाब देना है। अमेरिका के अंदर भी गलत कारी का केस है, उसको भी जवाब देना है। तो जवाब हम सब देंगे, मगर ये तरीका नहीं है स्पोर्ट्समैन जवाब दें। लोगों को लाइनों में लगाकर नींबू क्यों मिल रहा है, लोगों को लाइनों में ले आकर प्याज क्यों मिल रहा है, लोगों को 1 किलो प्याज के लिए 300 आदमी की लाइन लगती है। और ये वो पंजाब है जहां की सूरत हाल ये है कि यहां पर प्याज हो, नींबू हो, चीनी हो, उसके लिए लाइन लगती है। ये है सादक और अमीनों की हुकूमत। ये गुजारिश ये है, ये झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। ये तस्लीम क्यों नहीं करते कि ये नलायक और नाहल हैं और ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान चला सके। इफ्तिखार साहब, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। चलो जी, मेरा लास्ट कमेंट है शहबाज गिल, मेरी एक बात मान लो। आपने कहा ना कि मैं गवर्नेंस को जानता हूँ और साबका हुकूमत के साथ मेरे तल्लुकात रहे, तो उससे मैंने ये नहीं कहा गवर्नेंस को जानते, मैंने कहा उनकी गवर्नेंस को जानते, उनके वे ऑफ गवर्नेंस। मैं उनकी गवर्नेंस को जानता हूं, मैं उनकी वे ऑफ गवर्नेंस को जानता हूं। तो उनकी वे ऑफ गवर्नेंस भी वैसी है जैसी आपको दी जा रही है मालूमात। बराए मेहरबानी ब्यूरोक्रेसी की दी हुई मालूमात पे मत चलो, जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको भी देख लो। नंबर एक दूसरी बात आपने कही कि आप फैसलाबाद के हैं, अमेरिका के नहीं हैं और एब्सकॉन्डर नहीं हैं। अल्लाह करे आप एब्सकॉन्डर ना हो और आप पर कोई ऐसा मुकदमा न बने जिसमें आपको एब्सकॉन्डर होना पड़ो। तीसरी मेरी गुजारिश आपको से ये है, बराए मेहरबानी खुदा के लिए जो मामलात हैं इनको संजीदगी से लो। ये मामलात अच्छे नहीं हैं, महंगाई इंसानों को तंग कर रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। आई विश के इस डिबेट को हम मजीद आगे बढ़ा सके। इफ्तिखार अहमद साहब, शहबाज गिल साहब, तलाल चौधरी साहब और सेंटर आजिज धामरा साहब, उन्हें कहीं जाना था तो वो चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग है आपसे। अपनी दोस्तों को देखती थी तो हैरत होती थी, किसी का हस्बैंड उससे बहुत बड़ा, किसी की तालीम ना होने के बराबर। कोई तो खैर जाने दीजिए। मैंने फैसला किया है कि जब तक मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं करूंगी। फिर मिला marymax.com, पाकिस्तानियों के लिए वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां आपकी पसंद और मिजाज के लाखों रिश्ते। जब भी मुझे ये मिले, मिलाए दिल के रिश्ते। Every Ramadan, millions of lives are touched by your kindness and generosity. Since last year, you helped over 9 million people across the globe. You helped implement more than 14 relief and development programs. You helped fight against drought, hunger, deadly diseases, and illiteracy in over 26 countries. With your generous support, Helping Hand will continue to empower lives. Donate this Ramadan. 1-888-808-HELP or visit hhrd.org/Ramadan. Some moments are for voicing your opinion. Some days are for expressing yourself. Some conversations are meant to keep private. Some interests are supposed to be explored together. Husain, Deepana Hastu Husain.
न कोई दूसरा हुसैन मौला हुसैन दूसरा हुसैन मौला हुसैन है न कोई दूसरा हुसैन मौला हुसैन है न कोई दूसरा हुसैन वारिस सैयदुल अनाम हुसैन तुम पे अल्लाह का सलाम हुसैन राकिबे दोष साहिबे मेरा राकिबे दोष साहिबे मेरा अल्लाह अल्लाह तेरा मकाम हुसैन अल्लाह अल्लाह तेरा मकाम हुसैन तेरा बंदा शहीद ताजी है तेरा बंदा शहीद ताजी है ताजवर है तेरे गुलाम हुसैन ऐसा बादशाह हुसैन है मौला हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन मौला हुसैन है बादशाह हुसैन मौला हुसैन है मौला हुसैन है जिसकी फिक्र करबला है जिसकी फिक्र करबला हुसैन हसन का पहला हम सबर हसन का पहला हम सबर अली का दूसरा फिसर इमाम तीसरा हुसैन मौला हुसैन हसन का पहला हम सफर हसन का पहला हम सफर अली का दूसरा फिसर इमाम तीसरा हुसैन है तेरी मोहब्बत तेरे सामने खड़ी है, चल सिकंदर। और मैं क्या जानता था कि मेरी मोहब्बत की आग पूरा पिंड देखेगा। जा 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 भाग। पहली बार किसी ने हमारे इलाके में किसी को आवाज दी है, ये आवाज आखिरी बार होनी चाहिए। मैं देखता हूँ आज कौन बचाता तुझे मेरे हाथों से। जब तक ये माड़ी की पनाह में है इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सिकंदर ने मेरा हाथ पकड़ा तो बावजूद कोशिश के मैं छुड़ा नहीं पाई। जब से डोली उतरी है मेरी उस खंडर हवेली में, वहाँ मैंने अपनी चीजों की हैसियत तो देखी है मगर अपनी नहीं। हमारे असूलों के साथ इतनी ज्यादती, इतनी तौहीन हमारे फैसलों की। तो ये है आपका कसूर, माड़ी तख्त सुल्तान का इंसाफ, जिसमें एक मजलूम लड़की के लिए जरा सा भी रहम नहीं। देखिए मैं कमली सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर। न्यूयॉर्क में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। गिरदो नवाह के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ए अल्लाह इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है और क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत से बहरमंद फरमा। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, सब रंग हैं आपसे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, our dearest viewers and listeners, for our program Iqra al-Arabiya, Read Arabic. Once again, we say Ramadan Mubarak. We are today almost in the 12th day in Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us and help us to make Siyam and Salah and Zakah and the Dua. So it's
Ramadan days flying from us, and we are here to give today our class for Iqra al-Arabiya, read Arabic. As you noticed, we are 1 hour before the other hour, just make it because of Ramadan, to give you enough time before the iftar, inshallah. Remember last week, last episode, we read together the verses from Surah Al-Baqarah about the Siyam, which is أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. We read and we stopped in this verse, this ayah, with the translation and explanation. We didn't have a chance to go over the ayah رقم 186, verse number 186, which is وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. This is the verse number 186, آية رقم 186 من سورة البقرة, to complete the verses of the Siyam. But it says what? Now we still have more. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. إِذَا, if. سَأَلَكَ comes from the verb سَأَلَ, to ask. But سَأَلَ plus anta. سَأَلَكَ. If asked you, who? Here is the question. Ibadi, O Muhammad, if your ibadi asked you about me, so ibad comes from abada, and I think you went through that before, but no problem if we repeat again, okay? So, abada, to worship, but to worship who? Oh, God, nothing but God, no one but God.
يعبد, that's the verb in the present tense. Past, ماضي, عبد, مضارع, present, يعبد. How about imperative? اعبد. اعبدوا الله مخلصين له الدين. اعبد, worship Allah. عبد, he worshipped Allah. يعبد, he worships Allah. If you change it to the feminine, عبدت, if it's a girl or woman. تعبد, present, feminine. اعبدي. See, if I have a girl, I said, اعبدي Allah. Man, اعبد الله. طيب. After that, عبادي means the plural for عبد. What's the plural for عبد? عباد. عباد plus E, which is Allah. عبادي. So, نحن عباد الله. We are worshippers of Allah subhanahu wa ta'ala. We are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Just Allah, nobody else. عني, it contains of two. One preposition letter plus ana. عن plus ana. عني. See how the Arabic language goes? عني, to understand what you read. I repeat again, when you understand what you read, it's easy for you to recite and also to memorize. Very important to know that. And there's a difference between read, recite, memorize. The verb read, قرأ, present, يقرأ, memorize, حفظ, and present, يحفظ. That's why they call the person who memorized the Quran حافظ للقرآن. And it's a big difference, of course, you know, between, of course, to be قارئ للقرآن, a reader for Quran, that's excellent. To be a reciter for the Quran, that's excellent. But to be حافظ for the Quran, this is something else. This is, you're going to come in the day of judgment and you have a crown on the top of your head. So everybody look at you, this is the one who حافظ للقرآن. This only? No. Allah subhanahu wa ta'ala or the malaika told you, go in the paradise stairs, read, recite, say whatever you memorize, because you're going to say it from your memorizing. You are not going to carry the mushaf in the day of judgment or in the Jannah to go up. Okay, you memorize already, your heart full of Quran, your brain full of Quran. So اقرأ ورتل. So you read, you recite, and the more you read, the more you recite, you go upper, 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 upper. So you stop by the last verse you say. See how it's beautiful? If you are not hafiz, you cannot make it. So that's going to encourage us, inshallah, to be hafiz. But how are we going to be a hafiz? If we read correct, if we recite correct, if we understand, then we memorize easily. Don't ever, never memorize without understanding. Believe me, I'm not going to say it's bad. No, I say it's better if you make it with reading, reciting, understanding, memorizing. When you memorize, when you understand what you read, it's big different than when you memorize and you don't understand. Of course, it's a logic. Very important to know. So now when we know, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. All this because of عن plus أنا. عني, about me. Oh Muhammad, if my worshippers asked you about me, tell him I am close. Here is what Allah said. فَإِنِّي قَرِيب. Be careful with these two words. If I said إِنِّي قَرِيب, fine. Inna plus ana. Inna in Arabic language for emphasize. To make indeed, definitely sure, positively, I am close to my worshipper. So he told the Prophet, tell him I am close. But if Allah said, فَإِنِّي قَرِيب, that's even more closer because Allah subhanahu wa ta'ala added this word for the other. Fa in the Arabic language, as I mentioned before, we call it للتعقيب السريع, to add the word to the previous word as fast as you can. So, فَإِنِّي قَرِيب. When I say, for example, جاء أحمد, Ahmad came. And then, جاء أحمد ثم متين.
Ahmad came, then Mateen. Mateen can come after 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 day, 1 month. But if I said, Ja'a Ahmad, Ahmad came, فَمَتين, right after Ahmad, Mateen came. So just seconds, not even seconds, like that. Okay, فَإِنِّي, and then قَرِيب. قَرِيب means near, close. I'm so close. That's why we said قَرِيب. We talk about our relatives. قَرِيب, if I have a cousin who are قريبي, my relative, is related to me. قريب, close, near. So قريب, and قريب also if the place is close. Okay? So they said, this place is near. قريب. The word قريب, opposite of قريب. بعيد. So opposite. قريب, بعيد. It's Arabic language. You have to feel familiar with this language in order to be able to dive in the Quran. Believe me, without that, you're gonna live reading Quran just like a bird. I'm sorry. The way we read, you have to read it this way, inshallah. The way we recite, and also to understand. فَإِنِّي قَرِيب. قَرِيب, doing what? أُجِيب. Here is the verb أُجِيب. The verb أَجَابَ, to answer, to respond. يُجِيب, he responses. Ajib, respond. So, Ujib, Allah said, if my worshippers ask you about me, Muhammad, or Prophet Muhammad, فَإِنِّي قَرِيب. Allah didn't tell him, tell them I am قَرِيب. No, he said, I am قَرِيب. It means what? There is no mediator between you and God. You and him. We don't have this mediator in Islam, inshallah. So you want to talk to God, talk to him. Don't go to anybody else, tell him, please, you are closer to God more than me. Tell him I need whatever. No. Who told you he's closer than you? Maybe you are closer than him. Allah subhanahu wa ta'ala will listen to you carefully. But you have to be ready for that. You cannot ask Allah unless you are ready. You cannot go to the exam unless you studied. If you don't study and you expect to pass, you are not going to pass. So to talk to Allah, you have to be ready for that. How are you going to be ready for that? You know more than me. You do everything correct. Ujibu da'wat ad-da'i. Be careful with the word da'wa. Da'wa comes from the verb da'a. Da'a has many meanings. Number one, da'a, to invite somebody to eat with you. Invite somebody to attend the forum or to attend the meeting. Da'a, to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, accept our siyam. Oh Allah, accept our salah. Oh Allah, accept our reading for the Quran. Oh Allah, help me to know how to read and recite and understand and memorize the Quran. It is dua. You ask Allah. If you ask him, he will answer you. He will reply, inshallah, according to your intention. You mean it, Allah will reply to you as fast as you imagine. Ad-da'i. Da'i from the verb da'a again. Yad'u da'i. Da'i, the one who is calling for that. So as I said, da'wah is invitation, and da'wah is calling, and da'wah is prayer to Allah. See how many? إِذَا دَعَانِ. Oops, under one condition. If he asked me for something. You have to talk to Allah. Don't say, Allah knows what I have. Allah knows, but you have to talk to him. The Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam told us, keep asking Allah and keep insisting to ask. Don't say Allah gonna give up from my asking. No, Allah is not like us. If you talk to any person and say, please give me whatever, he's gonna say, okay, inshallah. And you keep repeating, can you give me this? He said, inshallah. You keep repeating, can you give me this? He said, hey, come on, you told me, that's it, that's enough. Okay, don't talk too much. Allah wants you to talk with him too much. Oh Allah, كونوا له حين في الدعاء.
لح في الدعاء. You know when you ask your father sometimes if you are young, Daddy give me this, please, 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 please. Okay, talk with Allah like that. Please, 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 Allah. Please, Allah. Please, Allah. Please, Allah. Like that. Like that. He's Allah. He's our God. And the more you talk to him, he listens to you. He's not going to give up unless you give up. إن الله لا يمل حتى تملوا. He didn't give up until you give up. إذا دعان فليستجيبوا لي. Allah, I listen to you when you ask me. So you have to listen to me when I ask you too. So Allah subhanahu wa ta'ala listened to us when we ask him. We have to listen to him when he told us, do this. He didn't tell us, he didn't order us for his benefit. He ordered us for our benefit. Do this because this is good for you. Pray because prayer is good for you. Fast because fasting is good for you. Pay charity, it's very good for you. You clean your money, you purify your money. Very important. Make Hajj once in your life if you are affordable health and wealth. So whatever Allah told us, don't say any bad thing about other people. Don't. This kind of don't. It's in our mizan in the day of judgment. So Allah didn't order us by anything unless he knows that's good for us. So we have to accept it when we are happy. When person come and told you, Ahmad, do this. Say, come on, don't order me. Don't give me order. We say that. Unless he's the big boss or something. See, you listen to him. How about the big boss? He's the big boss. We have to listen to him because he loves us. He doesn't like only to give us order to control us in a dictator way. No, because he loves us. He's so close to us more than any one of our life. He's so close to us. He loves us more than our beloved one. Can you believe that? You know who's the first one who loves you in this life? You said my mom, my dad, my brother, fine. Allah more than all of them. And the Prophet Muhammad too, alayhi salatu wassalam. You have to know that. That's why we have to love our Prophet more than ourselves. And we have to show Allah our love to him by our obedience to him. Very important. Sometimes I go a little bit out but from the reading, but I'm going to come back to the reading. But I want to tell you in the end, if you understand well again and again and again, you're going to read well. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. They have to respond my questions. They have to listen to my orders. If I say do this, they do this. If I say don't do this, they don't have to do this. Because both of them, for their benefits, as I told you. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Oh Allah. Look at this. Amana. Again I repeat, to believe. Yu'minu. He believes. Mu'min, believer. Iman, it's a faith. Yu'minu comes from huwa yu'min. Hum yu'minun. But because of la, they drop the noon. It's something here, okay? Has something to do with the jazm, with the joseph. But I'm not going to go further, but I want to tell you. This verb يؤمن, أنا أؤمن, أنت تؤمن, أنت تؤمنين, هو يؤمن, هي تؤمن, نحن نؤمن, أنتم تؤمنون, هم يؤمنون. And ليؤمن, not ليؤمنون, ليؤمنوا. When you have this le, it's a particle here. I put it before the verb. I drop the noon to mention that subjunctive. And then وَلْيُؤْمِنُوا. This is not subject, this is order. Lam al-talabiyya. So it's I. After this lam too, you have to drop the noon. Some for subjunctive, some for joseph. It's different now. We're going to study this later, inshallah. Well, they have to believe in what I told them. That's yu'minu. Believe in Allah. What's going to happen if they
يستجيبوا أن يؤمنوا. Here is the answer. لعلهم يرشدون. If they did that, they will go in the right way. طريق الرشاد, طريق الهدى, the way which is guided by Allah subhanahu wa ta'ala. What's the best way, better way than what Allah subhanahu wa ta'ala guide us to do? After all this, I'm going to read this ayah and I feel very comfortable. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. I'd like you to read it again. قَرِيب فَإِنِّي قَرِيب عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عبادي عني فإني قريب سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Oh Muhammad, if my worshippers asked you about me, I'm so close. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. I reply the prayer of whoever asked me for anything, if he did that. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. So I read the verse now. It's very clear in front of me, like a very clear, clean mirror. مرآة واضحة نظيفة. Now I'm gonna move, inshallah, to the verse number 187. If you have the Mus'haf, so this verse, it's really big. It's gonna take from us at least the half of the episode. That's why we're gonna go for a break now, and then we're gonna come back, inshallah, to continue our verses about the Siyam in our program here, اقرأ العربية in Ash TV. Don't go any place, okay? Wait for us to come back to continue our program. अपनी दोस्तों को देखती थी तो हैरत होती थी। किसी का हस्बैंड उससे बहुत बड़ा, किसी की तालीम ना होने के बराबर। कोई तो खैर जाने दीजिए। मैंने फैसला किया है कि जब तक मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा, शादी नहीं करूंगी। फिर मिला marymax.com, पाकिस्तानियों के लिए वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट, जहां आपकी पसंद और मिजाज के लाखों रिश्ते। जब भी मुझे ये मिले, मिलाए दिल के रिश्ते। Every Ramadan, millions of lives are touched by your kindness and generosity. Since last year, you helped over 9 million people across the globe. You helped implement more than 14 relief and development programs. You helped fight against drought, hunger, deadly diseases, and illiteracy in over 26 countries. With your generous support, Helping Hand will continue to empower lives. Donate this Ramadan. 1-888-808-HELP or visit hhrd.org/Ramadan. Some moments are for voicing your opinion. Some days are for expressing yourself. Some conversations are meant to keep private. Some interests are supposed to be explored together. Some comments are just for fun. Some connections are really special. Make real connections on Like app,
social network with privacy. Download today. Available on Android, iOS, and web. Once again, our dear viewers, we came back to resume our program اقرأ العربية, read Arabic. I told you before the break that inshallah we're going to go now to the ayah رقم 187. But I remembered something now when I talked to you about the person who is memorizing the Quran. We call him Hafiz, and I'm sure you call it also in your language Hafiz. And Hafiz from Hafiza, to memorize, Yahfaz, Ihfaz, Hafiz. And Hafiz also the one who keeps something. So he keeps the knowledge in his brain. He keeps the Quran in his heart and his brain. That's Hafiz. So it's a degree itself, and what a degree. More important than any PhD degree, believe me. If you reach the level to be a Hafiz for the Quran, you have to feel good and also say Alhamdulillah and make shukr for Allah subhanahu wa ta'ala. So I remember also that beside that the person himself, he has the crown that he knows among all the people in the paradise. He's a Hafiz for the Quran. Also, his parents, they will wear a very special cloth. It showed them in front of the other that the appearance of a person who memorized the Quran. So it's gonna be like honoring, not for you only, but for your parents, because your parents, they are the one who encourage you to memorize the Quran. Nobody gonna tell you do this when you are young, except your father and your mother, or of course whoever is good person, uncle or relative or friends, which is good. But usually the person who's taking care about the child when he's young, his mom, his dad, and his relatives. So they honor, Allah subhanahu wa ta'ala honor the parents that he let them wear something so special, and imagine something so special in the paradise, how it's gonna look like. And you go, and he said, why we wear this? They said, because of your son or your daughter. I'm not gonna say son only, could be your daughter, of course. A lot of girls, mashallah, and women, our sisters, they memorize the Quran. Much, much, much better than many boys and men, of course. So, and again, when we explain by masculine way, I'd like the female to understand that this is the language of the Quran, talking about the masculine, but means the both genders, male and female, ذكور وإناث. There is nobody has any favor over anybody else except by taqwa, the faith. Not male, not female, not white, not black, not red, not tall, not short, not fat, not thin, not. You have to know that. Your taqwa and your amal. Now I start to read for you verse number 187. It's the longest verse among the verses of the Siyam. You listen to me carefully. I will read the whole verse. Then after that, I'm gonna come part by part as we used to do. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. This is the verse number 187. هذه الآية رقم 187. Let's start with part by part. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. We stop here and we go. أحل لكم ليلة أحل لكم ليلة. Again. أحل لكم ليلة. Many lambs in these 3 words. الصيام. أحل لكم ليلة الصيام. Why I said الصيام with the sukun? Because I stopped. الرفث. Added to the previous. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. Because I stopped. Not الرفث. Then إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. There is nothing slower than that. I go step by step, word by word. I add the words together. When I stop, sukun. When I continue, haraka. So it goes till we say the part from the verse. I go part by part because it's very important to go step by step with this one. I'm sure this ayah, we read it 1,000,000 times and we know the meaning in English. But look now when you know the meaning in Arabic. Very important to know the meaning of the verses in the language which is the verse revealed with. I'm sure Arabic language is not easy language. It's a rich language, but inshallah it will be easy if you want to make it easy. The best way to face the difficulties, get in,
Face it, say, I'm here. I know many non-Arabs, they read the Quran much, much, much better than Arabs. And many Arabs, they know the meaning of the Quran more than any Arabs. They recite the Quran. They make a tajweed. They make a tartil better than many, 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 many Arabs. So it's not the word that he knows the language. No. Many Arabs, they know the language, but they don't know how to read the Quran. It's their fault. Okay, now, and they are guilty more than anybody else, by the way, if they don't do that. Let's go with uhilla. Uhilla, it's a verb, comes from ahalla, to make something halal. You know halal. So ahalla, to make something halal. To make something possible in a correct way. We call it lawful. So, but the verb ahalla, it's a verb in active. Uhilla, passive. Okay? Lakum, it's a li plus antum. Lakum, to all of you. Who? You Muslims. Lakum antum. What? Laylat al-siyam, in the night of fasting. Layla. We have a word layl, lam, ye, lam. That's a night. But layla, lam, ye, lam, ta marbuta, laylat. But when we read it layla by itself, when we add it, laylat al-siyam. So layla, night of. What's the night of Friday? Thursday night. What's the night of Saturday? Friday night. The night of Sunday. Okay? The Saturday night. So very important to know that. وحلل, it's halal for you in the night of the Siyam. To do what? الرفث إلى نسائكم. Rafath here, it's Arabic language. Rafath actually to make sexual treatment with your halal female, your wife. So when we talk about religion, there is nothing called the shy or whatever. It's a deen, it's a religion. And the language itself, the verb rafatha in Arabic language. Don't say rafatha. Rafasa, re, fe, sin, to kick. When the donkey kick or the horse kick or the animal kicks. Very important. But the verb rafatha, re with the fatha, fe with the fatha, tha with the fatha. Some Arabs, they don't know that. So, rafatha, when the male makes or made sexual treatment with his female in halal way, of course, your wives. Ila nisaikum. So, nisa. Nisa here, jam' imra'a. Imra'a is a woman. But the plural, not imra'at or no. Plural for imra'a is nisa. That's why we have a chapter in the Quran right after Surah Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, and Nisa. Full chapter in Quran for women. See how the Islam respects the woman and put the woman in its right place. Not like some people, they say the woman doesn't take her right. No, 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 no. Islam gave the woman right. If she doesn't take her right from the man, that's the man mistake. Okay? That's because of the society mistake. But the religion itself gave the woman its rights. And they have to know that. Nisa plus antum. Nisaikum. He's talking to the men now. Okay? Oh, men. Nisaikum. If the woman came, we said, oh, your men, rijal plus antunna, rijalukunna. Okay? It goes this way. Because it's ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, and then antuma, huma, and then hum, and then antunna, you plural feminine, hunna, you plural feminine. They plural feminine. Antunna, you plural feminine. Hunna, they plural feminine.
أنتن ليلى وسعاد وفاطمة. هن ليلى وسعاد وفاطمة. Any female name. So أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. See, it's halal for you, it's made lawful for you, to have sexual relations with your wife on the night of the Sawm. Every night, from what time to what time, you will see now. After sunset, after the iftar, till the dawn, before the dawn. After that, stop. Then it's so Islam is very, mashallah, very make it easy for everybody, as we said. Okay? Islam can come and Quran can come and say, hey, in Ramadan, don't touch your wife. In Ramadan, don't kiss your wife. No, no, no. Islam is a very elegant religion. He said, okay, after you break your fast, go ahead. Eat, drink, but don't forget to pray, okay? Don't play only. So, and you can have the sexual treatment with your wife, relation, with your wife in that night till the dawn, and then start again. Okay? I told you, I know that you know that, but look at the Arabic words, how it comes. And look at the other beautiful meaning here. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Allah, Allah, Allah for the language, Allah for the meaning. I know in English, you know it's easy, the covers, fine. But look at the one. They consider the woman as clothes to cover the man. It doesn't mean materialistically cover. No, by kindness, by love. Again, in the halal way, as you see. She cover you by her kindness. She cover you by her love. She cover you by her rich emotion. And you, man, you're gonna do, you have to be the same thing. So he said, Hunna, they female. Libasun lakum. Libas in Arabic language, the clothes you wear to cover your skin, to cover your body. Imagine you are without clothes. How are you gonna look like? So this cloth, we wear it to cover us. So the woman for the man, like the clothes to cover the man. The man for the woman, like the clothes who cover this woman. Kindness, loving, emotional way. We should be like that. Hunna, they feminine. Antum, you masculine plural. Hunna libasun wa antu libasun. Lahun, for them. علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. I wish I can do this part from the verse for you, but you told me the program is already the time. We reached the end of the program. So we take time, I know, but we have to take it to explain, to read correct, to understand, to recite, to memorize, and to fall in love with the reading Arabic, to read Quran, inshallah. It's my pleasure, our dear viewers and listeners, and inshallah, we will meet next week, inshallah, at 6 o'clock in our program, Iqra al-Arabiya. All what I can tell you now, Assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته. दोस्तों को देखती थी तो हैरत होती थी। किसी का हस्बैंड उससे बहुत बड़ा, किसी की तालीम ना होने के बराबर। कोई तो खैर जाने दीजिए। मैंने फैसला किया है
कि जब तक मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं करूंगी। फिर मिला मेरीमैक्स.com, पाकिस्तानियों के लिए वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां आपकी पसंद और मिजाज के लाखों रिश्ते। जब भी मुझे ये मिले, मिलाए दिल के रिश्ते। Every Ramadan, millions of lives are touched by your kindness and generosity. Since last year, you helped over 9 million people across the globe. You helped implement more than 14 relief and development programs. You helped fight against drought, hunger, deadly diseases, and illiteracy in over 26 countries. With your generous support, Helping Hand will continue to empower lives. Donate this Ramadan. 1-888-808-HELP or visit hhrd.org/Ramadan. फुर्सत नहीं ताजुब है अल्लाह के